Hello everyone, welcome to BDSK online classes. Myself Sanjay Verma. Dear students, today in this video I am going to teach you about significant figure. Okay, in a number. Significant figure. Significant figure. In a given number. Dear students, first of all I want to tell you what is significant figure. The total number of digits in a number including the last digit whose value is certain called as significant figure. Means यदि किसी संख्या में दिए गए समस्त डिजिट इंक्लूडिंग जीरो जिनकी वैल्यू निश्चित होती है कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, देयर आर फॉलोइंग रूल्स टू ऑब्टेनिंग सिग्निफिकेंट फिगर. रूल नंबर 1. रूल 1. All non-zero digits as well as zeros in between two non-zero digits are count in significant figure. Means किसी संख्या में दिए गए समस्त नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होते हैं और यदि किन्हीं दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए हुए समस्त जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, suppose that this is a number that is a 12,567. This is a number and you are seeing that in this number there is no one zero digit, means all are non-zero digits. Okay, so the number of significant figure is 1 2 3 4 5. ओके, तो बेटा आप देख रहे हो कि 12,567 में 5 सिग्निफिकेंट फिगर है. क्यों? क्योंकि इसमें एक भी जीरो डिजिट नहीं है. अकॉर्डिंग टू रूल all digits of a number if are non-zero digits they count in a significant figure. And second is if the zeros in between two non-zero digit count in a significant figure. Means किन्हीं दो non-zero digits के बीच में आए हुए समस्त जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाते हैं. मीन्स इन दिस नंबर देर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, इस संख्या में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सॉरी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं. Okay, next example is this is a number. In this number there are 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. There are 6 significant figures. Okay,
because these two zero and 1 0 comes in between two नॉन जीरो डिजिट। सो किसी भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए हुए समस्त जीरो सिग्निफिकेंट में काउंट होते हैं। ओके, रूल नंबर 2, रूल 2, zeros to the left of the first non-zero digit in a number are not significant figure। मीन्स किसी नंबर में पहले नॉन जीरो डिजिट के पहले आए हुए जीरोज को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करते हैं। Suppose that this is a नंबर, तो बेटा आप देख क्या रहे हो, इस 5 जो कि इस संख्या का नॉन जीरो डिजिट का पहला डिजिट है, उसके पहले 2 जीरो आए हैं, तो इन जीरोज को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। इसका मतलब इस नंबर में देयर आर ओनली 3 significant figure। ओके, तो ऑल द zeros that comes to the left of first non-zero digit cannot be count in a significant figure। Next example is there are 1 2 3 4 5 only 5 significant figure। Okay, this particular zero is not count in a significant because it is just left to the first non-zero digit according to rule। Okay, and next is rule number 3 is if a number ends in zeros but these zeros are to the right of the non-zero digit they count in significant figure। मतलब यदि किसी नंबर में कोई नंबर जीरो के साथ एंड होता है लेकिन वह जीरो उस नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड है तो उसकी काउंटिंग सिग्निफिकेंट में होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ number in which these two zeros come to the right side of this non-zero digit। So there are 5 significant figure। ओके बेटा, यदि किसी भी नंबर में जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड आए हों तो इनकी काउंटिंग सदैव सिग्निफिकेंट में की जाती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जांपल इज 2.500। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट। ओके, figure। Okay, in this number there are 1 2 3 4 significant figure। Why? Because these two zeros are come to the just right side of the non zero digits। Okay, and
Other examples are 0.0200 centimeter. In this number there are 1, 2, 3 significant figure. Okay, in this number this particular zero is not count. Why? Because it is just left side to the non zero digit. So okay, so only there are 1, 2, 3. These 3 digits are count in significant figure. Okay, I hope that all of you understood about significant figure. Next rule is that is rule number 4. The exponential power does not count in significant figure because the exponential power tells about the position of the decimal point. Okay, for example, suppose that this is a number 2.325. In this number there are only 4 significant figure. Okay, this particular power cannot be counted in significant figure. Why? Because the power of 10 is just telling about the position of decimal. Okay, so only 1, 2, 3 and 4 significant figure in this particular number. Okay, next is (1.05 into 10 to power minus 5). In this number there are only 1, 2 and 3 significant figure. Okay, I hope that all of you understood about these significant figures. Okay, next example is 6.022 into 10 to power minus 23. This is a number in exponential power. In this number only 1, 2, 3 and 4. Only 4 significant figure. Okay, so the exponential power does not count in significant figure because it tells just decimal point. Okay, so I hope that all of you understood about significant figure, definition of significant figure, about these rules and their examples. Thank you. Have a peaceful day.